of class 3rd. How are you all? Hope you all will be fine. So children, this is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. So children, today we are going to start a new poem, that is a song about myself. Yes, and this poem is from your reader book, that is Roots and Wings, and this poem is written by John Keats. All right, yes, and he was a famous poet. So let me tell you the meaning of this title, that is a song about myself. Song means गाना, as you know. About means के बारे में, and myself means खुद के बारे में. So the meaning of this title is वैसा गाना जो खुद के बारे में हो. ठीक है. So here there is a boy who is singing a song, you can say, and he is singing a song about himself. All right. So there is a boy and who is very much naughty, as you can see in the picture, and he is having a shoulder bag, right? Yes. So today we are going to know about this boy in the poem. So we will discuss it briefly. So shall we start the poem? Yes. All right. So there was a naughty boy was he. He would not stop at home. He could not quite be. In this poem there is a boy. In this poem we are talking about a boy that is naughty. Okay, and that boy is this one who is carrying a green bag. Fine? Yes. And as you know, what is the meaning of naughty? Yes, the one who disturbs other, the one who can't be quiet. It means natkhat, you can say. In Hindi you can say natkhat. Children, this is your first part in which I will explain the poem, and in the next part we will discuss the exercises of this poem. All right? Okay. And I will use both the languages, that is Hindi as well as English. Fine? So that no one can face any problem and it will be easy for you to understand. So let's start. Here there is a boy, as you can see in the picture, and he is a very naughty and he is going somewhere. Fine. There is a line, he would not stop at home. The person who is very naughty, they can't be quiet. Right? Yes. You must have seen in your class also. आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा ऐसे naughty बच्चों को जो क्या करते हैं ना, हर वक्त दूसरे को डिस्टर्ब करते रहेंगे, वो शांति से क्लास में नहीं बैठते. फाइन. यस. सो एंड दिस बॉय इज़ सच टाइप ऑफ बॉय जो क्या है, वो कभी शांत नहीं रहता और ना ही वो घर पर रुकना पसंद करता है. He took in his knapsack a book full of vowels and a shirt with some towels. There is a highlighted word, that is knapsack, right? Yes. And what is the meaning of that knapsack? इसका meaning होता है a shoulder bag, a bag with strips. You can say your school bag. Okay. So he has taken his school bag and he has put some book, a book that is full of vowels. Vowels means A, E, I, O, U, right? आपको तो यही पता है ना कि vowels मतलब A, E, I, O, U. तो क्या उसने बस ऐसी बुक रखी है जिसमें सिर्फ vowels लिखे होंगे? मतलब here the meaning is that कि ऐसा बुक जिसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं. ऑल राइट. ओके. And along with that he had put a shirt with some towels. He had put some towels also. He had put a cap for the night and he had put a hairbrush. A slight cap for nightcap, a hairbrush comb ditto, new stockings for old ones would split oh. And he had put a hairbrush. As you can see in the picture, at the side of his back there are two combs. One is your hairbrush and other one is your comb. All right, let me show it. See, brush. This is your brush, hairbrush, and this is your comb. Green one is your comb and the red one is your hairbrush. All right, both works are similar but their looks are different. All right, okay. So the word here, the word is highlighted there, that is ditto. And what the meaning of that word? The meaning of that word is similar, repeated. Okay, means hairbrush and comb, they both are similar, right? That's why there it has been used here, that word ditto. All right. Okay. So उसने क्या क्या अपने बैग में रखा है? एक बुक, एक शर्ट and with some towels. उसने कुछ towels रखा and then a cap, then a brush and then a comb. Fine. Okay. And then new stockings for old ones would split oh. उसने न्यू स्टॉकिंग्स रखा. स्टॉकिंग्स मीन्स व्हाट? द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टॉकिंग्स इज लॉन्ग सॉक्स. जो लंबे वाले मोजे होते हैं ना, जो ऊंचे आपके घुटने तक होते हैं, डैट इज योर स्टॉकिंग्स. ओके. देन इस बॉय ने क्या रखा है? स्टॉकिंग्स रखा ताकि जो पुराने वाले हैं वो अगर वो मतलब फट जाए या कुछ हो जाए तो उसको वो क्या कर सके? रिप्लेस कर सके. राइट.
This knapsack tight at its back, he riveted close and followed his nose. एंड उसने क्या किया, अपने बैग को बड़ा टाइटली पैक किया एंड देन ही हैड जस्ट उसने कैरी कर लिया अपने शोल्डर पर, बैक पर, ओके, एंड देन ही रिविटेड क्लोज. रिविटेड मीन्स होल्ड क्लोज, मतलब उसने बैग को, अब देख सकते हो पिक्चर में उसने अपने वो स्ट्रिप को अपनी तरफ खींच रखा है, राइट, यस. तो उसने क्या किया है, उसे टाइटली होल्ड किया और उसे अपनी क्लोज अपनी तरफ खींच रखा है. And followed his nose. Here the sentence is written here, and followed his nose. It means what? जो हमारी नाकें होती है, नाक होती है, नाकें नहीं है कि नाक होती है, सॉरी, वो क्या होती है, हमारे आगे होती है, राइट. तो जब हम मूव करते हैं, चलते हैं, तो हमारी नाक सबसे आगे होती है. तो यहाँ एक इस पोएम को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस लाइन को ऐड किया गया है कि वो जो बॉय है वो क्या कर रहा है, अपनी नाक को फॉलो कर रहा है. इट मीन्स वो जैसे से चल, जैसे उसकी नाक आगे बढ़ रही है वो भी उस तरफ चलता जा रहा है. एंड ही इज़ फॉलोइंग द डायरेक्शन दैट इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन. और वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, फाइन, ओके. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट पेज. हिज नोज टू द नॉर्थ देयर वाज अ नॉटी बॉय. अगेन इट इज़ रिटन हियर एंड ही वाज फॉलोइंग हिज नोज एंड ही वाज गोइंग इन द डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन. और वो अपनी नाक को फॉलो करते हुए किस डायरेक्शन में जा रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में. एंड कौन जा रहा था, दैट नॉटी बॉय. एंड द नॉटी बॉय वॉज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड द पीपल फॉर टू सी. एंड वेयर वॉज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कॉटलैंड. एंड वेयर इज दिस स्कॉटलैंड, इट इज़ इन इंग्लैंड, ऑल राइट, ओके. एंड फॉर वॉट पर्पज वॉज ही गोइंग, किस मकसद से वो जा रहा था, क्यों जा रहा था, येस, ही वॉज गोइंग टू सी द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड, ओके. It is written here the people for to see. There he found that the ground was as hard. और वो वहाँ जाने के बाद क्या क्या ऑब्जर्व करता है, देयर वॉज अ ग्राउंड विच वॉज हार्ड, ओके. ग्राउंड मीन्स जमीन जो थी वहाँ की वो क्या थी, बड़ा ही हार्ड थी. एंड दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग. एंड व्हाट वॉज द लेंथ ऑफ दैट ग्राउंड, उसका जो लेंथ था क्या था, दैट अ यार्ड, ठीक है. दिस इज योर मेजरमेंट यूनिट, ओके, विच इज इक्वल टू 3 feet, fine, yes. In mathematics you must have read about the measurement unit, meter, centimeter, kg, right, yes. In the same way it is yard, okay, this is also a measuring unit. So that ground was very much long, okay, and that was a yard. That a song was as merry that a cheery. और जो इतना लॉन्ग था, लाइक अ सॉन्ग, जैसे एक लंबी सॉन्ग होती है ना, इन द सेम वे दैट ग्राउंड वॉज ऑल्सो लॉन्ग, ओके. एंड वॉज एज merry that a cheery. And it was very much merry means what, happy, okay, yes. And it was very much beautiful, it was very much happy, like a song. What was happy, what was beautiful, that ground, okay, yes. That a cherry was as red. And here there he found a tree, as you can see in the picture also, there is a big tree, right. And he is looking at that tree, and that tree was full of cherries which was in red color. You can see in the picture, in the tree, on the tree there were so many cherries, right. रेड कलर के चेरीज लटक रहे हैं, हाँ हाँ जी, वही है. सो उसने वहाँ क्या क्या देखा, ही सॉ अ ट्री विच वॉज फुल ऑफ, विच वॉज लोडेड विथ चेरीज, ओके, एंड दैट वॉज ऑफ रेड कलर. एंड देन ही फाउंड देयर दैट लीड वॉज एज वेटी दैट 4 score वॉज एज 80. और उसने देर ही सॉ एन एलिमेंट विच वॉज लीड. आपने पढ़ा होगा लीड, अपने वो EVS की बुक में पढ़ोगे आप, okay. Lead, that is an element that is a bluish color, and that was very much weighty, मतलब उसके जो वज़न थे वो बड़ा ही heavy था, okay. That was very much heavy, जो lead था वो बड़ा heavy था. That 4 score was as 80. और वो कितने, उसकी quantity कितनी थी, that is was 4 times of score. One score is equal to 20, all right. And 4 times score means 4 into 20, it means 80. That was equal to 80. All right, okay. In that lead was very much heavy, and that was in the number of 80, okay. 80 वहाँ lead थे. That a door was as wooden as in England. And there was a door, okay. As you can see in the picture there is a house, okay, which is having a door, है ना. इस पिक्चर में घर दिख रहे हैं आपको, जिसमें एक चिमनी लग रखा है, इससे कुछ वो धुएं बाहर आ रहे हैं, स्मोक. एंड देन उसके डोर लगे हैं, है ना, यस. तो जो वो डोर है ना, here we are talking about that door, and that is of wooden, okay, that is of wooden. डोर भी तो कई तरह से होते हैं ना, लोहे के बने होते हैं, है ना. तो यहाँ जो डोर है that is of wooden, made of wood,
All right, yeah. And as in England, and he is in Scotland, means he is in England. So he stood in his shoes and he wondered. He was in England and he stood in his shoes means he was wearing shoes, as you can see in the picture. That boy was wearing shoes. Okay, and so he stood in his shoes, मतलब कि वो अपने shoes पहन कर गया था वहाँ. And he stood in his shoes and he wondered. और वो अपने जूते पहन कर खड़ा था वहाँ पर, और वो वहाँ जाकर he was just surprised, he was just shocked. और वो वहाँ बड़ा ही आश्चर्य से देखता जा रहा था सब कुछ, बिकॉज एवरीथिंग वॉज वेरी मच डिफरेंट, एवरीथिंग वॉज वेरी मच कलरफुल. सो ही वॉज जस्ट वंडरिंग एंड वंडरिंग. वो बड़ा ही ध्यान, आप देख सकते हो पिक्चर में जो बच्चा है वो कितने अच्छे से देख रहा है ना सब कुछ को, बड़ा हैप्पीली होकर देख रहा है, बड़ा आश्चर्य होकर देख रहा है. सो ही वॉज जस्ट वंडरिंग. राइट, एंड ही वॉज वंडर्ड मीन्स वो बड़ा ही आश्चर्य था. अरे ये क्या है, अरे ये क्या है. इट वॉज लाइक, बच्चे होते हैं ना कहीं जाते हैं तो पार्क में जाते हैं, अरे ये क्या है, अरे मम्मा देखो ये क्या मिला, इस तरह से करते हैं ना. यस, इन द सेम वे ही वॉज डूइंग, बट ही वॉज अलोन, ही वॉज नॉट विद हिज मम्मा. सो this was the poem which was written by John Keats. So children, that's all for today, and now we will meet in the next video, that will be the part 2. So if you have liked the video, then do subscribe my channel and hit the like button. So thank you and have a good day.